Today, these young leaders gather in New Delhi for a national conversation. A conversation about cooperation, a conversation about participation, a conversation about the future. Good morning everyone. Thank you very much for accepting our invitation and coming here. Now we will proceed with the lighting of the lamp to inaugurate the sanitary. I would like to invite Saksham to the stage. Let's hear about his journey with butterflies. जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत खुशी और गर्व का महसूस हो रहा है कि मैं अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट के बच्चों को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ. एक दोस्त के माध्यम से चांदनी चौक कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जुड़ा था. मैंने वहाँ देखा पहली बार कि बच्चे छोटे छोटे समूह में बैठकर कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हैं. तब मैंने पहली बार वहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग को जाना. The conference opens with a powerful message. Children must not merely be included in conversations about development. They must help lead them. Experts, practitioners, policymakers, and children come together to explore how cooperative values can build stronger communities. Respected dignitaries and delegates, professors and practitioners. Children were learning about health, personal hygiene, nutrition, preventable diseases, and the importance of keeping their community environment clean. Thank you very much. The butterflies and the cooperative approach is built upon powerful principle that recipients of services, they are active agents capable of analyzing problems, identifying solutions, taking collective action, and managing their cooperative. Are also learning about cooperatives and being part of it, and understanding about the khazana which you all have. Children are coming up with business ideas. They are taking a loan and they are running it and then repaying it back. So different countries, different models, different cultures, different contexts, but the lesson is the same. Cooperative leaders are not born, they are developed through experience. They emerge when young people are given opportunities to practice cooperation early in life. Thank you very much. Warm welcome to Mr. Jiji Mamen. Can we have a big round of applause for sir? I am happy that butterflies have taken this initiative. I am sure the people who are working with the children will be able to impart this training to the children, and they would be able to get better educated. Thank you for giving me this opportunity. It's an honor for me to moderate one panel. May I request Professor Dr. B. Tamil Mani, sir, please. Cooperatives, we can say it is a very, very suitable player for social innovation and sustainability and inclusive development, because considering the plus points of both organizations, cooperatives alone goes via medium, and that absorbs the plus points of both and tries to neglect the demerits. So it is the only way of life for protecting the commoners, for protecting the children, and for protecting all other persons who are interested in cooperatives. Thank you for this opportunity. Thank you. At the outset, I take this opportunity to appreciate the team members of Butterflies in bringing your children to this stage and demonstrating your wonderful work so far you have done. Professionalization of management is practiced. I just consider these Butterflies is a professionalized organization, and they are just conducting all these programs professionally. And where there is professionalization in the cooperatives, certainly the marginalized communities have developed socially and economically, and that will continue to do so. Health is more than the absence of illness. It is confidence. It is well-being. The Child Health and Sports Cooperatives help children understand nutrition, hygiene, and teamwork.
चाइल्ड हेल्थ एंड स्पोर्ट कोऑपरेटिव। इसमें हमने सीखा कि गुड हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है। पैसा होना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, गुड हेल्थ अच्छी हो तो हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। काफ़ी नहीं है कि बच्चे सिर्फ इम्यूनाइज हो जाएं, काफ़ी नहीं है कि बच्चों को कुछ टीके लग जाएं। अब समय आ गया है कि चाइल्ड ग्रोथ या कुछ सेवाएं मिलने के बाद उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए। तो उस डेवलपमेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है और उसमें कोऑपरेटिव फैमिलीज कम्युनिटीज़ की काफ़ी भूमिका है। कोऑपरेटिव में जुड़ने के बाद मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो मैं सोचती थी बस पैसे खर्चा करना है, लेकिन जब सब बच्चे पैसा बचा रहे तो मुझे भी पैसा बचाना चाहिए। और मुझ में ये परिवर्तन देख के मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि बाहर का जंक फूड नहीं खाती और मैं जल्दी बीमार भी नहीं पड़ती हूँ। अपना पैसा बचत करी और उसको अच्छी जगह पे इस्तेमाल करी। The cooperative awareness that starts from school level needs to be sustained and taken to higher level so that understanding of cooperatives, their appreciation of cooperatives is sustained. Thank you very much. And I want to say that it's not just social transformation, but it's regenerative social transformation, which is an outcome of empowerment, self-sustaining systems. Is what my hypothesis is. Why does this happen, and how can we retain that strength of freedom as we build human cooperatives? कोऑपरेटिव मॉडल जो है बटरफ्लाइज का इसलिए यूनिक है क्योंकि ये एक्सपीरियंस देता है, तो हमें एक बेहतर समझ बनती है। तो मुझे लगता है कि ये कोऑपरेटिव जो है बच्चों में एक सशक्तिकरण का एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है जो बटरफ्लाइज लेकर के। Day 2 explores another important question. How can children learn financial responsibility and leadership from an early age? The answer lies in Children's Development Khazana, a cooperative created by children for children. Through saving, budgeting, and collective decision-making, children learn skills that prepare them for life. Children are not just the leaders of tomorrow. They are capable leaders of today. Now I invite Gungun, one of our child members. मैं बटरफ्लाई से पिछले 7 सालों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ आकर मैंने बहुत सारी और नई नई बातें सीखी। जैसे मैंने सीखा कि एक अच्छा लीडर कैसे बना जाता है, ज़रूरतों और चाहतों में अंतर कैसे किया जाता है, और सबसे खास बात, मैंने अपनी आवाज़ की ताकत को पहचाना। अगर मैं 7 साल पहले वाली गुनगुन को देखूं और अब की गुनगुन को देखूं, ये महसूस करती हूँ कि अब की गुनगुन ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और एक क्लियर करियर गोल के साथ है। Throughout the conference, one message emerges again and again. Children are not future leaders. They are leaders today. Their ideas matter, their experiences matter, and their voices deserve to be heard. The confidence of having the eye-to-eye contact while you perform a speech is called your public communication skills, and that is the result of the effort of the great organization like Butterfly, which has done for the past 37 years. The impact of children's cooperatives does not end in childhood. Years later, former members continue to carry these lessons into their education, careers, and communities. We have gathered some of our alumni who has been part of Butterfly. जब मैं बटरफ्लाई से जुड़ी थी, मैंने बेसिक अकाउंटिंग जैसे कि टर्म्स डिपॉजिट, विड्रॉल, बैलेंस शीट क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, बैंक रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक्टिविटीज़ होती हैं, वो मैंने वहाँ पे सीखी। पूरे बटरफ्लाइज को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक पंख दिया जिसके सहारे आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और उसी पंख के सहारे मैं आगे भी बहुत ऊंचा उड़ूंगा। थैंक यू भैया और दीदी। जब मैंने बटरफ्लाई के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा अरे ये तो बड़ा अच्छा है, इससे कम से कम बच्चों को रोज़ घर से पैसे लाने और पॉकेट में लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उनका बैंक एक गुल्लक जो एक तो उनके घर पे है, किलकारी में भी उनका एक गुल्लक होगा जिसमें वो जब वो चाहें उससे पैसे निकाल सके, इस्तेमाल कर सके। हम सब लिटरेट हैं, फिनेंशियली लिटरेट नहीं हैं। मीन्स लाइफ इज देयर, मीन्स रिस्क इज देयर। आई शुड हैव सम मनी इन सेविंग, आई शुड सेव, I should invest if I have surplus money,
I should insure myself so that I will protect myself from the future risks. So I should think about that now. Butterfly's module of cooperation, cooperative methods, participation of children, and we are very happy to reconnect this module, not only savings but life skills that are taught through this program that has been put in place. It's one of the best programs for children. हम लोग तो ये सीखते हैं कि सेविंग सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो स्पोर्ट्स कोऑपरेटिव है सभी बच्चे के पास जाए और आगे जो हमारा फ्यूचर जो डिजिटल वाला होने वाला है वहाँ पर बच्चे डिजिटली एकदम बंधे नहीं, स्पोर्ट्स से जुड़े और जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते उनके पास भी एक्सेस करें बटरफ्लाइज. थैंक यू. The very bright children who have displayed incredible poise throughout the 2 days. Children being like plants, you have to create conditions for the plant to grow that include soil, sunlight, care, water. Similarly, children cooperatives do. They create real roles, real decisions, real money, real meetings, real responsibility, real consequences, real solidarity. And through all of this, they live these experiences to be able to learn from these experiences. It is the power of repetition, and hence they learn. Finally, appreciation goes to our donors and Mijerior and Comic Relief, FIFA Foundation, Butterflies USA Foundation. These are supportive to run, manage our cooperative and support children. An inspiring world for all the children. Thank you very much. मैंने सेविंग करना सीखा है. मेरे अंदर आत्मविश्वास आया है. हमने एक साथ काम करना सीखा है. A generation that believes in collective progress. A generation ready to shape a better future. Communities grow stronger, and the future becomes brighter.